नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत आप सभी का जीवन की पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो ठीक हो और खुश हो। With keeping this theme, let's start today's video. Before starting the video, first of all, I would like you to give a recap of whatever we have seen in the previous video. In the previous video, we saw that after getting enlightenment, Buddha realized that there is a way to end the suffering, and that is nothing but the eightfold path. And he gave the eightfold path. In the previous video itself I discussed about why it is called the middle path. इसे middle path क्यों बोला जाता है ये भी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. In the previous video itself we discussed that this path can be studied under three heads, that is ethical conduct, mental discipline and wisdom. Today we will deal with the ethical conduct, and in the subsequent video we will discuss with the mental discipline and the wisdom. Now, if I want to share my own experience when I was digging deeper to know and to understand the path itself, जब मैं इसमें काफ़ी डिटेल में पढ़ रहा था, at that time I realized that whatever Buddha told or whatever is given in the path is nothing new. I was already familiar with all the things. इनफैक्ट जब आप ये वीडियो देखोगे तब आपको भी पता चलेगा कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ या जो चीज़ें पाथ में दी गई है उसमें कुछ भी नया नहीं है, बिकॉज ये चीज़ें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. बट द प्रॉब्लम इज देर इज वन रूल इन द साइकोलॉजी, दैट इज व्हाट इज इजी टू गेट इज इजी टू लूज. जो चीज़ जितने आसानी से समझ में आती है वो चीज़ उतने ही जल्दी हमारे दिमाग से निकल जाती है. तो ये चीज़ें जो आप देखोगे, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ऑल ऑफ अस हैव बीन लिसनिंग टू इट सिंस आवर चाइल्डहुड. हमारे पेरेंट्स भी ये चीज़ें बताते थे, मेंटर्स, टीचर्स सभी हमें ये चीज़ें बताते हैं. सो देर इज़ नथिंग न्यू इन इट, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूटिंग इट इन आवर रियल लाइफ, इट इज 10 times difficult. So this is the most important thing that you need to take into cognizance over here. Now ethical conduct में अगर हम देखें तो right speech, right action and right livelihood. Under right speech, that all of us know that we need to abstain ourselves from backbiting, जिसे backbitching बोलते हैं. I firmly believe that अगर आप किसी के बारे में दो अच्छे शब्द नहीं बोल सकते हो तो आपको कोई भी अधिकार नहीं है दूसरों के बारे में बुरा बोलने का. तो दिस बैक बाइटिंग, हार्श यूजिंग हार्श, रूड, इम्पोलाइट वर्ड्स, एब्यूजिव लैंग्वेज, वी नीड टू, ये बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं बट एग्जीक्यूट बहुत कम लोग करते हैं. दैट इज द थिंग. Then again, truthfulness, it is said that we should be truthful to ourselves, we should not manipulate the things. And yeah, ये चीज़ें दूसरों को बताने में काफ़ी आसान है. इट्स वेरी इजी टू इट्स वेरी इजी टू गिव एडवाइस टू अदर्स that we should be very truthful, we should be very kind, we should not backbiting. But when it comes to you given a chance to behave in a impolite way, or to given a chance there is a something in your favor, अगर कुछ आपके बेनिफिट्स, आपके लिए कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अगर आप झूठ बोलोगे तो आप क्या करते हो उस समय, दैट डिटरमाइंस एवरीथिंग, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू बेसिकली. तो वेनेरेट, मैं अपने लाइफ में एक रूल बहुत इजीली फॉलो करता हूँ, ट्रुथफुलनेस. whenever I get confused or something like that, first of all you should not lie at all, because when you are lying you need to, in order to hide one lie you need to speak 100 lies, and when you are lying it will create a karmic effect. एंड एक झूठ छुपाने के लिए आपको कार्मिक इतने झूठ बोलना पड़ेगा कि ये साइकिल क्रिएट होगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे सबको आपको पता चल जा सबको आपके बारे में पता चल देगा दैट यू आर अ लायर काइंड ऑफ स्टफ, यू मैनिपुलेट द थिंग एंड ऑल दोस थिंग. ऑलवेज बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन योर लाइफ, दैट्स व्हाट आई लर्न. एंड बी always speak a naked truth, whatever it is, that it is simple thing. अगर आप इस तरीके से रहते हो तो you will never get into trouble, आप कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे. when you are a person that who always speaks the truth, doesn't matter what happens at that time. नेक्स्ट, काइंडनेस. काइंड ऐसा बोला जाता है कि काइंडनेस इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. काइंडनेस इज अ लैंग्वेज दैट ब्लाइंड कैन सी एंड अ डीफ कैन हियर. तो काइंडनेस, it it it's very important to be kind basically. and the thing is, इसके बारे में भी, फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ आई हैव सम बिजनेस टू डू विथ यू, अगर
मुझे आपसे कोई कुछ तो भी चाहता हूँ मैं आपसे, तो देर इज इट इज़ हाईली लॉजिकल दैट मैं आपके साथ अच्छा ही बिहेव करूँगा। बट हाउ आई ट्रीट अ पर्सन हु सीमिंगली कांट हेल्प मी इन एनी वे, जो इंसान मुझे किसी भी तरीके से मदद नहीं कर सकता है, उस इंसान के साथ मैं कैसा बिहेव करता हूँ, दैट इज माई ट्रू कैरेक्टर, दैट इज माई ट्रू पर्सनैलिटी। एंड that's why we all should be very kind when it comes to the behavior, and when it comes to kindness मैं हमेशा एक चीज बताता हूँ, it's very important to be kind, be smart enough, be kind enough to forgive, but don't be stupid enough to trust again। अगर एक इंसान आपके साथ बार बार उसी तरीके से बर्ताव कर रहा है एंड यू आर फॉरगिविंग दैट पर्सन टाइम एंड अगेन, सो एट दैट टाइम नेक्स्ट टाइम आप, वो उसकी गलती नहीं, इट इज यू दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि आप कल इन द प्रीवियस वीडियो आई टॉक्ड अबाउट लॉजिक एंड कंपैशन, दैट इज लॉजिक एंड इमोशंस के बारे में, इसका बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आप आई हाईली रिकमेंड यू टू go through that video जहाँ पे logic and emotions, yeah it's important to be kind, but at the same time you need to maintain the balance of logic and emotion also। so this is nothing but the right speech। अगर आप, if you have a good speech, if you use a good words whenever you speak to others, number of things will favor in your place। next is nothing but right action, and if you see the right action, फर्स्ट अगर हम देखें इसमें abstain from destroying life, then yeah it's important that we should not destroy anyone's life, whether it is a animal lives or whether it is a human lives, any kind of lives। now यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि for instance what happened, I was walking on a road and all of sudden an ant or any insect, I trample on an ant or insect, मैं किसी किसी एक एंट के ऊपर या किसी इंसेक्ट के ऊपर मैंने पैर दे दिया, तो क्या ये कार्मिक इफेक्ट क्रिएट करेगा? आई विल मेक अ नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर बनाने वाला हूँ, कर्मा के ऊपर। बट स्टिल फॉर टाइम बिंग आई वांट टू टेल यू व्हाट बुद्धा सेड, इट्स ऑल अबाउट द इंटेंशन। अगर आपने जानबूझ के किया है, सो या इट विल क्रिएट अ बैड कार्मिक इम्पैक्ट, एंड इफ यू डिड इट अननोइंगली, अगर आपने जानबूझ के ये इंटेंशनली नहीं किया है, तो it will have no karmic effect, and that is a thing which need to be taken into cognizance over here। next is abstaining from stealing। all of us know that we should not steal anything। चोरी करना, इधर उधर डाका डालना, all of us know that ये बिल्कुल सही नहीं है। abstain from dishonest dealing like corruption and all those things। I told you ये चीज़ें दूसरों को बताना काफ़ी आसान है, इसको स्टेज पे जाके भाषण देना बहुत ज़्यादा इजी है, बट व्हेन इट कम्स टू योरसेल्फ, आप किस तरीके से बिहेव करते हो। इफ़ आई गिवन अ चांस समवन इज ब्राइबिंग यू टू डू समथिंग और किसी को पता भी नहीं चलेगा, तब आप क्या करते हो, दैट इज योर ट्रू कैरेक्टर, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट। नेक्स्ट, abstain from sexual misconduct। yeah Having multiple sexual partners, no extramarital affairs, having having sex before marriage, all these things are will create a karmic impact, and it will dig a grave for you basically। so involving in any kind of sexual activity which is completely immoral, that is the thing we need to abstain ourselves from these things। so this is nothing but the right action। next is right livelihood। right livelihood again, abstain from harmful profession। कोई भी प्रोफेशन जिसमें दूसरों का नुकसान हो, इस ऐसे प्रोफेशन हमने नहीं करना चाहिए। अगेन टुडे वर्ल्ड हैज़ बिकम हाईली, व्हाट यू कैन से, नो वन इज बॉदर अबाउट एनीवन। सो किसी को किसी इंसान से फर्क ही नहीं पड़ता है। so there is no humanity nowadays, and it's very easy to fall into the trap of harmful profession। तो या यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दोज प्रोफेशन जिसके वजह से दूसरों को नुकसान होता है। अब ये कोई नया नहीं है, आई एम नॉट टेलिंग यू एनी रॉकेट साइंस, ये बचपन से हम लोग सुनते आ रहे, बट हाँ व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूटिंग इट, इट इज़ वे मोर डिफिकल्ट। इसलिए बोलते हैं कि ईजियर सेड दैन डन। नेक्स्ट इज रिफ्रेनिंग फ्रॉम वायलेंस। हमें सबको पता है वी शुड नॉट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ वायलेंस। नेक्स्ट, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड पॉइजन। ये लाइक selling selling alcohol, selling
drugs or any kind of poison which is harmful to others. It is also, अगर आप ये करते हो तो it will create a karmic effect and that will ये cycle बनाता है actually एक, which I will explain in the subsequent video, and that create the problems in the coming future, and that it basically leads to the nothing but, that is nothing but the दुखा. तो ये सारी चीजें एंड पे आती है सफरिंग पे ही, दैट इज द ओनली थिंग. ट्रेडिंग इन आर्म्स एंड लिथल वेपन्स, किसी भी तरीके के आर्म्स, किसी भी तरीके के वेपन को ट्रेड करना, उसका व्यापार करना, ये पूरी तरीके से गलत है. अगर ये करते हो तो इसका भुगतना आपको यही पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट द सफरिंग एंड दुखा. So this is nothing but the right to livelihood. Okay guys, that's it for today. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe my channel Siddhant Life School. You can connect with me through the Instagram also, Siddhant Life School. This is my Instagram channel. Thank you guys, thank you for watching this video. Have a great evening ahead.